में से हाफ ही हुआ। Okay, Spush, we will check. So this is limit x tends to 0, x plus 1 to the power 5 minus 1 by सर आपने भी क्या यही स्टार्ट किया है? जी नम्रा, हमने अभी यही स्टार्ट किया. We are discussing the doubts. Okay, so what is our formula? Limit x tends to a, x to the power n minus a to the power n, and x minus a. So this is equal to na n minus 1. This correct? Yes, sir. Okay, so we will compare this one, this with this. First is this is x plus 1 to the power 5 minus 1. So ये हमारा match नहीं हो रहा है. So हम क्या करते हैं? In place of this, we will let anything. For example, we will let p is equal to, okay. Let p is equal to x plus 1. So now this will become p to the power 5 minus, in place of 1 we can write 1 to the power 5, and here we have a x. So Spush, can you tell me in terms of p what can we write over here? सर आप रिपीट कर सकते हैं? p Yes. minus 1. Good, very good, Noma. P minus 1. So Namra, this is a question from exercise 13.1. ओके सर, नहीं वो मैंने सुन लिया था, मुझे लगा जो क्वेश्चन पूछ रहे थे मैं वो पूछ रही Okay, sorry. So हम कह रहे थे in place of this हमने put कर दिया p minus 1. Now in the denominator we have a x. So in place of x हम क्या put कर सकते हैं? We can find the value from here. X is equal to p minus 1. Okay. हूँ. ओके सर. Okay. Spush, this clear? Yes, sir. Sir, x is equal to p minus 1, no? X is equal to p minus 1. In place of x, we have put this p minus 1. Now limit. Okay, now everything is in terms of p. So what can we write in the bracket? We can write when x tends to 0. Okay, in this one, when x tends to 0, then p tends to 0. no, X. no. We have this p. One. Oh, very good. P tends to 1. We have this p is equal to x plus 1. So in place of x, when we will put 0, then this will become what? P is equal to 0 plus 1. Okay, So sir. actually x will not be equal to 0. X will approach to 0. So when x go towards to 0, then this p go towards to 1. That's why we have written when x tends to 0, when x tends to 0, p tends to 1. So we will get from here. Okay. Now Spush, can you apply the formula? Yes, sir. Okay. So what is the final answer? So we'll put this formula. Okay. N means 5. A means 1. 5 minus 1. So this will equal to 5. Okay, Spush? Yes, sir. Okay, good. Noma and Ramra, this clear? Yes, sir. Okay. Please note down this and क्वेश्चन भी करा दीजिए. okay. Please note down this. फिर further continue करते हैं. Sir, done. Done. Okay. डन. Okay. So next, आपके सारे doubts मैं पहले collect कर लेता हूँ. So next, you have a doubt in question number 5th. Okay. Then after 5th, in which question you have a doubt? 7th. Okay, 7th. After 7th, Sir, 10th. 10th. After this, Sir, Result. 20, 29. 29. Okay, 31. Okay. So next is 5th question. Okay. So limit is, I guess, number ये आपका doubt है? Question number 5th. यस सर. I guess question clear नहीं हुआ है ना? नहीं सर, जब ये टाइप के क्वेश्चन होते तब मैं लेट ज्वाइन थी तो इसलिए नहीं Okay.
So our first type number was direct substitution. We will directly substitute this value in the equation, and if we are getting a real number, then that will be our answer. So number आप check कर सकते हैं direct substitution based है. Please put this value. बताइए what's the answer? One by -2. Very good. This is correct. Okay. Next, we will discuss question number 7. Question number 7. So 7th is limit x tends to 2, 3x squared minus x minus 10 by x squared minus 4. Okay. So we need to first of all factorize this one. So कैसे हम कर सकते हैं factorize? Limit x tends to 2. We will check this 30, है ना? So we can write 3x squared minus 6x plus 5x minus 10 by x square minus 4 can be written as x square minus 2 square. So this is limit x tends to 2. In this we will take a common x minus 2, and this we will take 5 common. This is x minus 2. So the denominator will become x minus 2, x plus 2. Okay, so this will become limit x tends to 2, and this will give you 3x plus 5, and next is x minus 2 by x minus 2 into x plus 2. Okay, this part cancel. Now we finally get this one, limit x tends to 2, 3x plus 5 by x plus 2. Okay, so put this value 6 plus 5 by 2 plus 2, which is equal to 11 by 4. This is our final answer. Okay. Okay, sir. Okay. So please note down this, then we will start the next question. सर अगर किसी नंबर की पावर फ्रैक्शन में हो तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं? इस पर सेम मेथड, नथिंग चेंज. ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं वो भी. सर हम मोस्टली वही फॉर्मूला यूज करते हैं ना, x to the power n minus a to the power n upon x minus a is equal to n a. नंबर दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप, है ना? इफ अगर वही टाइप है हमें वो फॉर्मूला यूज करना होगा. ठीक है, अभी तो हम पावर फ्रैक्शन में होती है मोस्टली तब. मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना? अभी चेक करते हैं कौन से क्वेश्चन. ओके, सो प्लीज कंफर्म मी वंस यू नोट दिस. रिटन. डन. ओके, नेक्स्ट करते हैं फिर. आई एम टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 2 minutes. ओके.
Okay, so next was question number 10. This is limit z tends to 1, z to the power 1 by 3 minus 1 by z to the power 1 by 6 minus 1. Okay, so Sparsh, Noma and Abra. Noma, आपने ज्वाइन कर ली? Noma, I guess आप break पे. Okay. So in this one, we will again use the same formula. Limit x tends to a, x to the power n minus a to the power n by x minus a. So if we will compare this, so Sparsh, what we need in the denominator of this? Sparsh, इसके denominator में क्या चाहिए हमें? So 1 to the power 1 by 3. नहीं, हमें चाहिए z minus 1, है ना? Yes, sir. And, Denominator. and similarly, in this denominator, what we need? In this denominator, we need z minus 1. Okay, Sparsh? Sir, ये आपने कैसे लिखा? Sparsh, हम multiply and divide कर सकते हैं ना? Yes, Just sir. suppose हमारे पास x by y है, so we can divide this with some number. We can divide denominator with the same number. This will cancel out, so we will get the same expression. Okay, sir. Okay, so Namra, Noma, this clear? Yes, sir. आपने क्या किया फिर से बताते हैं? Okay. Noma, so we have this question number 10. Okay, z to the power 1 by 3 minus 1 by z to the power 1 by 6 minus 1. So we have this formula. So if we will compare this formula with this expression, so Noma, denominator में हमें क्या चाहिए to put this formula? Z minus 1. Z minus 1. So what we have done, we have divided this with z minus 1. Similarly, for this one, we have divided this with z minus 1. ओके सर बट मैंने तो दूसरे मेथड से किया था, मैंने दोनों तरफ 2 से पावर में मल्टीप्लाई कर दिया था. Okay. Noma, अभी आपका method भी check करते हैं. Okay. Now what we will do, we will put this limit. This is limit z tends to 1. This is z to the power 1 by 3 minus 1 to the power 1 by 3 by z minus 1. Okay, and similarly in the denominator, we will put the limit z to the power 1, and this is z to the power 1 by 6 minus 1 to the power 1 by 6. Okay, so Sparsh, can you tell me what is the answer for this one, numerator? Sparsh? सर what's the- आपने x by y और ये साइड में x y क्या लिखा Okay, बच्चे बस explain कर रहे थे कि denominator में अगर हम divide करते हैं. Sparsh, Yes, sir. what's the answer for this one? Compare with this formula. 2. We'll check. N means 1 by 3. A means 1 to the power n minus 1. N minus 1 means 1 by 3 minus 1. And similarly, in the denominator, we have 1 by 6. 1 to the power 1 by 6 minus 1. Okay, so this will give us what? 1 to the power minus 2 by 3. And this will give us 1 by 6 to the power minus 5 by 6, which is nothing. This is 1. 1 to the power anything is 1. So we will get 1 by 3 by 1 by 6, which will give us 6 by 3, which will give us 2. Okay, Sparsh, Namra and Noma, this clear? यस सर. Sparsh, Sir, आपने 1 की power minus 2 by 3 कैसे करी? मुझे ये आएगा ना 1 by 3 minus 1. Okay, sir. ठीक है. Noma, this clear? जी सर. Okay. And Namra? Yes, sir. Okay. Noma, आपने कौन सा method use किया इसमें? सर मैंने पावर में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया था सर. z टू द पावर 1 by 6 into 2. 1 by 3 आपने कर दिया 1 by 6. So फिर टू द पावर 2. ये फिर ऐसे हो जाएगा z2 into 1 by 6. यस सर, यही किया. Okay, फिर
-1 square. ओके, फिर ये था z 1/6 - 1, फिर आई गेस आपने इसको होल स्क्वायर लिख दिया है ना? यस सर, यही किया. अच्छा 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 अच्छा, पे a² - b² कर दिया, ये कैंसिल हो गया, सो फाइनली z⁴ 1/6 And प्लस sir, 1. ओके ओके, नोमा, वेरी गुड, दिस आल्सो करेक्ट. okay sir. Okay, good. Okay, please confirm me once you complete this, then we will start next Yes, question. sir. Done? Done. No, done. Okay, Noma, this done. Yes sir. Okay, so next is question number 29. What is limit x tends to a1? Okay, सर 29th क्वेश्चन का बस फर्स्ट वाला पार्ट नहीं हो पाया था, सेकंड हो गया था. okay, we will check. Let a1, a2, and so on an be fixed real number. Fixed real numbers, and define a function fx is equal to x minus a1, x minus a2, and so on up to x minus an. Then what is limit x tends to a1 fx? First we need to find this. Okay, so what this will become, limit x tends to a1 and x minus a, x minus a, sorry, x minus a1, x minus a2, and so on up to x minus an. So when we will put this limit, so this become a minus, sorry, a1 minus a1, a1 minus a2, and so on up to a1 minus an. So anyone can tell me what is the answer for this? 0. Very good. There's 0. This will give you 0. So 0 into all complete is 0. Okay, Sparsh and Noma. Yes, Yes sir. sir. Okay, please note down this. Then we will start next one. So Sparsh, second part हो गया था इसमें, Yes, sir. है ना? Second में वो क्या कह रहा है? A is not equal to a1, a2, and so on an. A is not equal to with this. So what is limit x tends to a? तो क्या हो जाएगा? This is x minus a1, x minus a2, and so on up to x minus an. So put this value, you will get a minus a1, a minus a2, and so on up to a minus an. Okay, Sparsh, Noma Yes, and sir. number. Okay, very good. Please note down this, and we will start next question. Sir, done. Okay, Noma and number, this done. सर इसमें फाइनल Sir, आंसर तो इस- यही होगा. G, for the first part, final answer is this. For the second part, final answer is this. ओके सर, इससे Okay. आगे और नहीं कर सकते सॉल्व? नहीं, कुछ इसमें हमें वैल्यूज नहीं पता है ना. So this will be the final answer. ओके सर. Okay, sir. Okay, so we will start next one. Next is question number 31. 31 is a function, if the function fx satisfies limit x tends to 1 fx minus 2 by x² minus 1 is equal to pi. Okay, then we need to find this value. Wait, limit fx. ठीक है, प्लीज ट्राई फॉर 1 or 2 minutes दिस क्वेश्चन. ठीक है, आप कर सकते हैं, ये टफ नहीं है. प्लीज, सॉरी, दिस इज x tends to 1. प्लीज ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन फॉर 1 or 2 minutes. फिर भी अगर डाउट है देन आई विल हेल्प यू. ओके.
सर नहीं हुआ। बच्चे प्लीज अगेन ट्राई, हो जाएगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Sir, done. Okay, very good. Spush, what's the answer? Sir, 2. Answer is 2. Very good. Nomay number. सर करके दिखा दीजिए। Okay, then I will do this question. Okay, in this one क्या है आपके पास, limit x tends to 1 f(x) minus 2 by x square minus 1 is equal to pi. ठीक है, आपको करना क्या है, you need to put the limit, क्योंकि हमारा कोई फॉर्म नहीं है इसमें, है ना, so we will put this limit. So limit x tends to 1, हम न्यूमरेटर में लिमिट पुट कर देंगे, and separately we will put the limit in denominator, is x square minus 1 is equal to pi. Okay, so what this become, this become limit x tends to 1 f(x) minus 2 is equal to, shift this to the right side, so this will give you pi limit x tends to 1 x square minus 1. Put the limit over here, so you will get limit x tends to 1 f(x), ठीक है, ये constant है ना, so this remain 2, यहाँ कोई change नहीं होगा, and this is pi. When you will put this limit, this will become 0. So ये कितना हो जाएगा, limit x tends to 1 f(x) minus 2 is equal to 0. So this will give you limit x tends to 1 f(x) is equal to 2. So this is the final answer. Okay, no my number. यस सर। Please note down this. Any other doubt? नो सर। No. Okay. नो सर। Okay. Noma, so you have a doubt in stats, ठीक है, हम ये क्लास के एंड में या तो डिस्कस करते हैं, और वी विल डिस्कस टुमारो, ठीक है, बिकॉज स्पर्श का एग्जाम है मंडे, सो मैं चाहता हूँ आज हमारा लिमिट्स कंप्लीट हो जाए पे, ठीक है। ओके सर। आफ्टर दिस चैप्टर वी विल जस्ट डिस्कस द डाउट्स, हमारे प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स हैं 1 और 2 क्लासेस हम सिर्फ डाउट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर्स, क्योंकि अभी हमने काफ़ी जल्दी चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, तो आपके डाउट्स सब डिस्कस नहीं हुए हैं। ओके, सो वी विल जी, सर आप एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी करवा दीजिए। ठीक है, अभी करते हैं फिर। नेक्स्ट थ्योरम इज, next theorem, if angle theta, if angle theta is measured in radian, is measured in radians, okay, in radians, then first part is limit theta tends to 0, okay, so this is limit theta tends to 0 cos theta. Okay, if theta is measured in radian, then this limit theta tends to 0 cos theta, this will be equal to 1. Second our formula, limit theta tends to 0 sin theta, this is equal to 0. Okay, so theta tends to 0 cos theta, this is 1. Theta tends to 0 sin theta, this is equal to 0. And third is limit theta tends to 0 tan theta, this is equal to 0. And our fourth formula is limit theta tends to 0 sin theta by theta, this is equal to 1. Okay, so always remember, in this case theta should be tends to 0, and if this is theta, then this should be theta. This is x, this should be x, this is y, this is y. So if we have this one sine 2x by x, so anyone can tell me what is the answer for this? 1. These two should be same. Okay, so in this case these two are not same, these two are different, so Okay. what we will do, we will multiply and divide with 2. So we will multiply this with 2, we will divide.
Okay, so this is not an angle, so we can multiply and divide this with 2. We can't multiply and divide this. Okay, this is a part of an angle, so we can't do anything in this. We'll do like this. Now 2 is a constant, so we'll write over here and we will write limit x tends to 0 sine 2x by 2x, and this will give you 2 into this is what 1. Okay, number Noma is push. This clear? Yes, sir. Okay, so Okay, so no need to write this. We will again discuss this in our questions. And next one, fifth. Fifth is limit theta tends to 0, and this is tan theta by theta. This is equal to 1. Okay, so please note down this and then we will start some questions. Please confirm me once you do this. फिर ऐसा भी होता है कि cos theta by theta is equal to 1. Cos theta by theta is not नहीं, ऐसा नहीं होता है. Please confirm me once you note this. सर अगर थीटा टेंस टू 0 नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? In that case, Numa हमारा 1 ही होगा, है ना? Then depends on the value of theta और फिर हम put करेंगे फिर find करेंगे. मतलब suppose अगर ये 0 नहीं है, then in case put the value of theta. For example, if you have this theta tends to pi by 6, then in the angle please put pi by 6. Okay. सर फिर उसके बाद हमें 10/6 की वैल्यू लिखनी होगी. उसके बाद हमें सर जो आपने अभी समझाया है उसमें हमें 10/6 दिया था अगर, तो उसमें फिर वैल्यू लिखनी होगी. उसके बाद फिर वैल्यू उसमें पुट करनी होगी. ओके सर. रिटन सर. Done. Okay. Spush and Noma. Written. Okay. Spush. Written. Please confirm me, Spush. Okay. Once you complete this. Done. Okay. Then please try this question. Question is so first is limit x tends to 0 sine 3x by x. Okay. Please try this question and share your answer. Number of very good is correct. 3 very good. Spush 3. Yes, sir. Okay, then please try the second one. Limit x tends to 0 sine 5x by 2x. Okay, please try this. So 2.5. 2.25. Answer is Sorry, 2.5. 2.5. Very good. Noma, that's done. Yes sir. Okay, answer is 2.5. Yes sir. Okay, very good. Please try this one. Limit x tends to 0. This is sine ax by sine bx.
So 0. B by A. Answer is not B by A. This is A by B. Okay. Please check the calculation. Sparsh, please check again. फिर नहीं हुआ. You? Okay. Please check this. Third one. Answer 3. So this is limit x tends to 0 sine ax. Okay. And we have a sine bx. Now, if we need to put the formula, then in the denominator, what we need? A. Only a? AX. 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 So we will divide this with ax and multiply with x. Okay. And similarly, if we need to put the formula in the denominator, then we will divide with what? BX. BX and multiply by BX. Very good. Multiply and divide with bx. Now what happened? This one x will cancel out. This is a by b, which is a constant, so that can be written outside the limit. Now we have this limit x tends to 0, and this we have sine x by x, and this is sine bx by bx. Okay. Now we will put this limit separately in the numerator and denominator. So we will get this one. This is limit x tends to 0 sine ax by x. Limit x tends to 0 sine bx by bx. Okay. So this will give you a by b, and this will give you 1, and this will give you 1. So final answer is a by b. Okay. So this clear? Sparsh, no my number. Yes, sir. Okay, very good. So any doubt? No, sir. Okay, okay. Then please note down this, and then we will try next question. So done. Okay. So everyone has completed this. Shall we start next? No, sir. Okay, okay. Done. Okay. Next one. Fourth. Fourth is limit x tends to 0. This is sine square ax by sine square bx. Okay, please try this. And these are your answers. Answer A is a square by b square. Answer B is b square by a square. Answer C is 0. Answer D is 1. Okay. Number are very good. This is correct. So इसमें सेम वही वाला फॉर्मूला लगेगा ना? G. Same way method. Okay.
सर ये आप सोल्व कर दें. Okay, so in this case, this is limit x tends to 0, and this is sine square ax by this is sine square px. Noma, very good. This is correct. So what can we do, Sparsh? We can write limit x tends to 0, and this is sine ax by sine bx whole square. Okay, so this will give limit x tends to 0, and this is sine ax. So in the denominator, we need a ax. So we will multiply and divide with ax. This is sine bx, okay, by bx into this whole square. So this x will cancel out, and we have this a by b. Okay, so when a by b will go outside of this square, then you will get limit x tends to 0, and this will give you a square by b square, this sine ax by ax sine bx by bx. Now put this limit. So this will give you a square by b square, and this is limit x tends to 0 sine ax by सर आपने ax. स्क्वायर को सिर्फ a और b पे कैसे किया? Just अब ठीक है स्पर्श. यस सर. Sine bx by bx whole square. Now separately put the limits in the numerator and denominator. So you will get limit x tends to 0 sine x by ax by limit x tends to 0 sine bx by x. Okay, whole square. So this will give you a square by b square, and the numerator you will get 1, and then a square by square. Okay, Sparsh? यस सर. Okay, very good. Then please note down this and confirm me once done, then we will start the next question. सर डन. Okay, very good. So Sparsh, please try this question. So following. No, just one more question. Fifth one, limit x tends to 0 sine square 3x by x square. Okay, please try this question. Number, your answer is 3. Number, your answer is 3 for this Yes, question. sir. No, 3 is not correct. Please again check it. सर आंसर 1 आ रहा है क्या? No, not correct. Again check it.
Sir, 0. Not 0. I will solve it. इस push हो गया ये complete. सर मेरा भी 3 आया था बट आपने बताया रॉन्ग है. We'll check. So we will write sin 3x by x whole square. ठीक है, आपने square miss कर दिया सबने. So in the denominator हमें क्या चाहिए? If we need to put this formula, this push, what we need in the denominator? The 3. 3. So we will multiply and divide with 3. Okay. Now this is a square. So when this 3 comes out of this bracket, so this will become what? 3 or 9? So 9. 9. So this is 9. Okay, and this will become limit x tends to 0 sin 3x by 3x whole square. So this will give you 9 to 1 square, which is 9. Okay. Yes This- sir. तो मैंने बस 3 as it is ना लिख दिया. I'll do that. So मैंने भी. Not issue. Please note down this, and then we will start next question. Okay. Please confirm me once you complete this. Is push no my number? Shall we start next? But then Okay. सर No. एक क्वेश्चन ऐसा भी करा देना जिसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 के अलावा कुछ और वैल्यू हो. Okay. अभी करते हैं इस push. No my number this time. यस सर हो गया. Next start करते हैं फिर. Next is with the following. Okay, so first question is limit x tends to 0, 1 minus cos 2x by x square. Okay, please try this question. Achha, do you remember the formulas of trigo 1 minus cos 2x and 1 plus cos 2x? Do you remember this? This is 2 sin square x, okay, and this is 2 cos square x. When we have a 1 minus cos 2x, this will give you 2 sin square x. This angle will become half. When this is 1 plus cos 2x, then you will get a 2 cos square x. Okay. Yes. Number and Noma, this clear? रिपीट कर दीजिए फिर से. Yes, sir. Okay. Noma, repeat कर दें? यस सर आपने क्या कहा, आवाज लैग हो गई थी. Okay. So Noma, we have these two formulas of a trigo that 1 minus cos 2x, this is equal to 2 sin square x. Okay. 1 minus cos 2x is 2 sin square x, and 1 plus cos 2x is 2 cos square x. ओके सर. Okay. So now please try to do this question. So answer is 1. Is push no, answer is not 1. Which calculation mistake हुआ है? ये 2 आपने miss किया है, push. Okay sir, 2 please. Yes sir. Please tell me the final answer. Sir 4. Not 4. No my number. What's the answer of that? 1 मिनट 4 है. Okay. Push, please again check the calculation. Okay sir.
Sir, 4. Not 4. Namra, what's the answer? सर मेरा भी 4 ही आ रहा है, पता नहीं 4. Okay, check करते हैं. So this is limit x tends to 0. Okay. 1 minus cos 2x means 2 sin square x by x square. This 2 is a constant. आप सबने mistake क्या किया, आपने इसको भी square में कर दिया, but 2 is not in the square, so 2 is a constant that will shift to outside the limit, and you will get limit x tends to 0 sin square x by x square. So you will get 2, and this you will get limit x tends to 0, and this is sin x by x whole square. Okay, so we will get 2, and this is limit x tends to 0, and this will give you 1 square, which is answer is 2. Okay, number no minus push. Yes, sir. ठीक है, so 2 square में नहीं था, इसलिए 4 नहीं होगा ये. So okay, please note down this and confirm me, then we will start a new question. Sir, done. Done? No my number? Done. yes Done. Okay, then we will start the second one. Limit x tends to 0, 1 minus cos 2x by x. Please try this question. सर लास्ट क्वेश्चन में 2 सर 2 हमने स्क्वायर में क्यों नहीं लिया था? बच्चे क्योंकि ये स्क्वायर में नहीं था. This one 1 minus cos 2x is 2 sin square x, so वो outside the square था. बट 2 तो मल्टीप्लिकेशन में है ना. मल्टीप्लिकेशन में फॉर एग्जांपल 2 into x square by y square है, so इसका मतलब ये तो नहीं है the answer of this is equal to ओके सर. okay. Please continue this. Sir, answer is 0. Push, very good. Answer is 0. Good. No my number. Please try this and confirm. Number you have written 2. सर मैं फिर से ट्राई कर रही हूँ. Okay, okay. सर 0 मेरा Very नहीं आ good. रहा आंसर. Okay, we will check. So Push, can you tell us the steps? कैसे करना है हमको ये solve? सर हमें डिनोमिनेटर में x स्क्वायर चाहिए तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद x. Okay, okay. So this become 2 sin square x. So very good. हमें denominator में x square चाहिए, so multiply and divide with x. Very good. So this will become 2 limit x tends to 0. We have x, and then we have sin square x by x square. Correct, Push? So this will give you us 2, and then we will separately put the limits. एक हम यहाँ put कर देंगे limit x tends to 0 x
एक लिमिट हम यहाँ पुट कर देंगे, लिमिट, ठीक है, ये स्क्वायर है, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x square. Okay, so this is 2, this is 0, and this is 1 square, so this will give us 0. Okay, Spush, sorry, no mind number, this clear? Yes, sir. ऐसा कर सकते हैं कि हम 2 को अलग कर दें और फिर लिमिट x टेंड टू 0 करके sin स्क्वायर x बाय x था तो sin x into sin x कर दें, फिर sin x बाय x तो 1 आ गया और जब हम sin x की लिमिट लेंगे तो वो 0 हो जाएगी। बच्चे, इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, तो आप कह रहे हैं कि हम sin x कर दें और sin x by x कर दें, है ना? यस सर। और लिमिट यहाँ पुट करें, ये 0 हो जाएगा, एंड दिस विल गिव यू 1 which will finally give us 0. यस सर। Okay, this also correct. Okay. Please note down this, then we will start a new question. Done. सर वेट, Okay. डन। Okay, very good. Then please try this question. Part third, limit x tends to 0, 1 minus cos x by x square. Okay, please try this. सर हमने ये कर लिया। बच्चे ये डिफरेंट है, पहले x था डिनोमिनेटर में, now we have x square. ओ तो 1 minus cos x का भी कोई फॉर्मूला होता है? Same formula. sin स्क्वायर x। 1 minus cos 2x is equal to 2 sin square x. ठीक है, एंगल हाफ हो जाएगा. So 1 minus cos x है, then what is the formula? sin स्क्वायर x। 2 sin square x by 2. Okay, एंगल हाफ हो जाता है. ओके सर। Okay, so please continue this. का हो गया, आंसर 1 आ रहा है। Answer is not 1. Please again check this. No more number and push. Doubt in this? Shall I solve it? यस सर। Okay. यस सर।
So in this one, we have a limit x tends to 0. Now what's the formula? 1 minus cos x 2 sin square by x square. So this 2 constant, this will be shift over here. So this is limit x tends to 0. And this is sin square x by 2. We can write x by 2 by x whole square. Any doubt? सर ये तो 2 कैंसिल होकर sin square इसमें तो लिख सकते हैं डायरेक्ट. Okay, this one. Yes sir. Okay, then please tell me this. 2 sin 30 degree. Can we write this is equal to sin 60? Yes sir. कर सकते हैं? Okay. नहीं सर वैल्यूज अलग हो जाती है. Values अलग हो जाएगी ना. So this is 2 into this is half and sin 60 is root 3 by 2. So different होगा. Now, so always remember अगर 2 sin के outside है angle से multiply नहीं होगा. Okay? Okay sir. Okay, so this will give 2. Okay, so limit x tends to 0. This is sin x. अच्छा limit हम बाद में put कर देंगे. Okay, so we will write equal to 2 limit x tends to 0, and this is sin x by 2 by this is x. अब denominator में भी हमें क्या चाहिए? By 2 चाहिए, हाँ. Whole square तो हम क्या करेंगे? 2 से divide and multiply in the denominator. Okay, so this is 2. This is limit x tends to 0. Now this constant ये whole square है, so ये outside जब bracket आएगा तो by 4 हो जाएगा. ये हो जाएगा sin x by 2 by x by 2 whole square. So this will give you 1 by 2, and this will give you limit x tends to 0 sin x by 2 by x by 2 whole square. So this will give you 1 by 4, and this is 1 square, which will give you 1 by 4. Okay, Spursh, know my number? Yes sir. Yes. Okay, just give me a minute. ये हमने 2 miss कर दिया ना. So ये 2 भी था हमारे पास. 2, 2, 2, which will give us 1 by 2. So this is the final answer. Okay, so please note down this, confirm me, then we will start a new question. So done. Okay, no my number done. Written. Okay, now next one. Next question is limit x tends to 0, and this is 1 minus cos 2 mx by 1 minus cos 2 mx. Please try this. सर ये सारे क्वेश्चन क्या 1 मार्क में आ सकते हैं? नहीं बच्चे 1 मार्क में नहीं आएंगे. ठीक है. ओके सर. सर जी बच्चे. हमें क्या इन्हें रैशनलाइज करना है पहले? Just put the formula 1 minus cos 2x formula. ठीक है. Similarly in the denominator also put the formula. सर इसमें फॉर्मूला में 2 sin square mx आएगा ना. So this will give you limit x tends to 0. This will give you 2 sin square mx. Similarly 2 sin square mx. Okay, please try this.
सर यहाँ पे 2 स्क्वायर में नहीं है ना? नहीं बच्चे, ये स्क्वायर में नहीं है तो So 1. this answer is not 1. Please again check it. Any doubt in this? सर आंसर 2 आ रहा है क्या? Not 2. We'll check this. 2 will cancel यहाँ पे out. जीरो आ रहा है क्या? नहीं, 0 भी नहीं है. Limit extends to 0. And we will write it as sine mx by sine nx. Okay, whole square. So this will give you limit extends to 0. Now, इसमें हम directly limit put नहीं कर सकते हैं ना. So this is mx. So in the denominator, what we need? Ceramics. Mx by mx. Okay, and in this case also sine nx. In the denominator, we need nx. Okay, but if you are multiplying this, so हमें क्या करना होगा? Divide भी करना होगा mx and similarly nx and whole square. This clear? Yes sir, मैंने भी ऐसे ही किया है. Okay, अब check करते हैं. X will cancel out. Now m and n are in squares. So outside this square, this become m by n square. This limit extends to 0. This will give you sine mx by mx sine nx by nx whole square. So this is equal to m square by n square, and put the limit. So limit extends to 0 sine mx by mx by limit extends to 0 sine nx by nx whole square. Okay, so this is m square by n square, and what is this? This is 1 and by 1 whole square. So answer is m square by n square. Okay, Spush, Noma and Namra, this correct? Yes. Yes sir. Okay, okay. So please note down this, confirm me, then we will start a new type. So done. Done. Okay, done. Okay, so we will Namra, Noma, this done. Yes sir. Yes. Okay. Next we will try this सर one. आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं कि आप क्या क्या कितने चैप्टर्स हो चुके हैं? जी बच्चे अभी करते हैं. Following limits. Let's try this. Limit extends to 0. Tan x minus sin x by this is x cube. Okay, please note on this, and Noma, I will confirm you. Just give me a minute. हमने ट्रिगो किया था, बट नोमा ने बाद में ज्वाइन किया, सो वो हम दोबारा करेंगे. वी हैव डन relations and functions. फिर we have completed complex number,
We have done linear and linear अभी नहीं किया हमने. Then we have done sequence and series. We have done straight lines. We have done stats, and we are doing right now limits. ठीक है? This one going. Okay. So please try to do this question. Then we will start next time. सर यहाँ पे tan को sin by cos करके सिंप्लीफाई करना है. जी. Okay, then take sine common, take LCM. फिर हो जाएगा Yes. solve. सर आपने कैसे बताया अभी करने के लिए? Suppose change this tan into sine by cos. Okay, then take LCM. ओके सर. One by 4. Answer is not 1 by 4. Answer is 1 by 2. Okay. Which calculation mistake कर रहे हैं? Please again check it. Please let me know if you have any doubt. Then I will solve it. तो ये आप सोल्व कर दो. Okay. सर sin x into cos x का कोई फॉर्मूला होता है? Sin x नहीं. So this is limit x tends to 0. Sir, last step में हो रही है sir. Okay, we'll check. Tan x can be written as sin x by cos x minus cos x. Sorry, minus sin x by x cube. So this will give you limit x tends to 0. This will become sin x minus sin x into cos x by cos x by x cube. Okay. Now in the numerator, please take common. X tends to 0. Okay, and in the numerator take sin x common, so you will get 1 minus cos x by cos x by x cube. So this will give you limit x tends to 0, and this is sin x. This will become cos x. 1 minus cos x, and this will give you x cube.
Okay, so this is limit x tends to 0. This sin x by cos x is tan x into what is 1 minus cos x? 2 sin square x by 2 by x cube. So this will give you limit x tends to 0 tan x. This 2 is a constant which can be written outside this. So this will become 2. And this we have sin square x by 2 by x cube. Any doubt till now? नो Sparsh? सर मैं cos x लिखना भूल गई थी तो इसलिए वो गड़बड़ होने लगी। Okay. Sparsh, this clear? सर आपने 2 sin square x upon 2 कैसे किया? Sparsh, इसको क्या ना? What's the formula of 1 minus cos x? Okay, sir. Okay, so please note down this, then we will continue this one. Please confirm me once time. सर ये x क्यूब G, फिफ्थ स्टेप कैसे हुआ? which one? This? यस सर। बच्चों ये x cube है ना, cos x यहाँ multiply हो जाएगा. अच्छा ओके ठीक है। सर हमें पता कैसे चलेगा कि जो ये 2 स्क्वायर में है कि नहीं? Which two? Okay, this one. देखिए, अगर आपके पास है sin like this 2 sin x whole square, इसका मतलब ब्रैकेट में है, बट यहाँ तो सिंपली 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना विद sin square x by 2. तो ये तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है. ठीक है सर। अगर हमारे पास कोई केस आता है एंड यू हैव अ डाउट, ठीक है, फिर आप उसको बताइए. And please note this and let me know. Then we will continue this one. Yes, sir. Done, Sparsh? Yes, sir. Okay. फाइनल आंसर यही है तो? नहीं, this is not the final answer. अभी हम solve करेंगे इसको. So this is 2 limit x tends to 0. We have tan x and we have sin square x by 2 and we have x cube. Okay. So this is 2. Now limit x tends to 0. Now we have a formula of tan x by x and we have a formula of sin x by x. So हम क्या कर सकते हैं? This x cube, इसमें से एक 1x को हम मूव करते हैं with tan x. So tan x by x. ऐसे हो गया? There is a square. So एक square हम मूव करते हैं here. So this is sin square x by 2 by x square. ठीक है? So this is 2 limit x tends to 0. This is tan x by x. Now this can be written as what? Sin x by 2 by x whole square. This clear? No more number. Okay. यस सर। If we need to put the formula, then we need to divide this and multiply with 2. So this will give 2 limit x tends to 0. This is tan x by x. And this is sin x by 2. And this is x by 2. और ये आपके पास जो 2 square है. Okay, so this will become 1 by 4. And this is whole square. Now we will start putting the limits. So 1 by 4 ये हो जाएगा 2 by 4. यहाँ एक लिमिट पुट करते हैं, लिमिट x tends to 0 tan x by x. नेक्स्ट लिमिट हम यहाँ पुट करते हैं, लिमिट x tends to 0 sin x by 2 by x by 2 whole square. So this will give you 1 by 2. This will give you 1. This will give you 1 whole square. So final answer is 1 by 2. No more number and Sparsh. This clear? यस सर। Okay, so please note down this, confirm me, then we will do a new type of question.
सर मेरा बीच में नेट चला गया था, ये बता दो आपने उस इस पेज पे अभी तक क्या समझाया है? ओके स्पर्श इतना क्लियर है? ये हमने लास्ट पेज से लिया है। यस सर। देन दिस इज 2 ओके। अब यहाँ x क्यूब है स्पर्श, सो दिस x क्यूब कैन बी मूव टू, अच्छा अब हमें क्या चाहिए, हमें tan x में भी x चाहिए, तो हमने x क्यूब को ब्रेक कर दिया x स्क्वायर एंड x में, 1x इज मूव विद tan x एंड एक x स्क्वायर हो गया। इतना ठीक है स्पर्श? सर बट हम तो ऐसा नहीं करते थे, हाँ tan x के साथ भी x क्यूब होगा और उसके साथ भी sin स्क्वायर x। ओके 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 स्पर्श वो होता है प्लस प्लस, माइनस में होता है। प्लस के केस में होता है ना, प्लस माइनस में। Now, अब क्या किया हमने, दिस tan x बाई x, ये स्क्वायर है, सो हमने कॉमन स्क्वायर लिख दिया है ना। अब डिनोमिनेटर में सिर्फ x था हमारे, अब जब कॉमन स्क्वायर लिखा हमने देन वी हैव अ x इन द डिनोमिनेटर। हमें क्या चाहिए x बाई 2, तो हमने क्या किया x बाई 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। ठीक है स्पर्श? यस सर। नाउ ये स्क्वायर है 2 है, सो ये 4 हो जाएगा 1/4। ये tan x बाई x हो गया। नेक्स्ट ये क्या है, sin x बाई 2 बाई x बाई 2 होल स्क्वायर हो गया। ओके स्पर्श? यस सर। So this is 2/4 limit x tends to 0 tan ये x by 1/4 कैसे आया आपका? इस पर ये था ना 2 यस स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा। ओके सर। So limit x tends to 0 tan x by x and limit x tends to 0 sin x by 2 by x by 2 whole square. So this is 1, this is 1. Finally we get 1/2. ओके सर। Okay. So इसको जल्दी से नोट कीजिए, then we will start a new type of questions. कॉट और कोसेक की भी आइडेंटिटी होती है? नहीं बच्चे कोई आइडेंटिटी नहीं होती, फिर वही cos और sin के जो आइडेंटिटीज हैं आप उसी को यूज करते हैं। ठीक है, so cosec x है, yes sec है, so then change that into 1 by sin 1 by cos and put the identities of cos and sin. ओके सर। Spush, please confirm me once you know this. सर 1 मिनट। Okay. यस सर डन। Okay, Spush. So next type is solution of trigonometric limits. Limits when variable tends to a non-zero quantity. ठीक है स्पेश, फिर आपने जो कहा था कि अगर वो टेंस टू 0 नहीं है then that is this type. So for example हमारे पास क्वेश्चन कैसे होगा, लिमिट x tends to pi sin x by x minus pi. ठीक, we have this one. So in these types of questions क्या करना है, first of all तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर रियल नंबर कोई आ जाता है देन वेल एंड गुड, 0/0 या 1/0 फॉर्म है, हम फिर फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो इफ इन दिस केस हमने अगर डायरेक्टली पुट किया लिमिट पाई, तो साइन पाई 0 और ये भी पाई माइनस पाई 0 हो गया, सो डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा। सो इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या करना है, लेट करना है, लेट x इज इक्वल टू पाई प्लस h। ठीक है, जो भी यहाँ नंबर है x इज इक्वल टू पाई प्लस h, उसको लेट कर। First thing is this. Now, in the bracket, please write when तो यहाँ पे h क्या है? h अभी देखते हैं, when x tends to pi. कोई मुझे बता सकते हैं when x tends to pi, h tends to क्या होगा? x minus pi. नहीं, when x tends to pi, what is h?
जब x पाई को अप्रोच करेगा, h किसे अप्रोच करेगा? x पुट करते हैं इन प्लेस ऑफ x, अगर हमने पाई पुट किया तो h कितना आएगा? 2 पर 0, Yes, sir. 0. है ना? when x approaches to pi then h approaches to 0. this correct? नोमा Yes, नंबर है स्पष्ट? सब क्या हो जाएगा? लिमिट हो जाएगा। एक तो h टेंस टू 0 हो गया, साइन इन प्लेस ऑफ x क्या पुट कर देंगे? पाई प्लस h पुट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? इन प्लेस ऑफ x हम क्या पुट कर सकते हैं? पाई प्लस h माइनस पाई। सो ये कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 साइन पाई प्लस h कितना होता है ना? तो इस लाइन द क्या होता है? 0 पाई बाई 2 एंड पाई। सो थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट ये साइन h हो जाएगा। साइन क्या होता है इन थर्ड क्वाड्रेंट? ऑल स्कूल टू कॉलेज negative. नेगेटिव, सो पुट अ नेगेटिव साइन। ओपन दिस ब्रैकेट, पाई पाई कैंसिल हो गया, h आ गया आपके पास। ठीक है, Yes, sir. सो पुट दिस, कितना हो जाएगा? ये नेगेटिव आ गया माइनस एंड ठीक है, सो दिस विल गिव यू लिमिट साइन h by h which will give you -1. Okay, so please note down this, and if you have any doubt then please let me know. सर क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6 भी दे सकते हैं ना? x tends to पाई बाय 6 कुछ या कुछ कुछ भी हो सकता है, that depends on the question. सर तो फिर हमें h की वैल्यू भी चेंज करनी होगी। अगर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फिर कोई जरूरत नहीं है। ओके सर। तो यहाँ पे माइनस साइन x कैसे आया? सर ये थोड़ा समझ नहीं आया। अच्छा, ये समझ नहीं आया। सर हमने लिमिट डाली या नहीं डाली है, मतलब ये इसे एक्सप्लेन कर दीजिए फिर से सेकंड स्टेप से। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ क्या किया हमने? हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लेट किया, लेट x इज इक्वल टू पाई प्लस h। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा? व्हेन x टेंड्स टू पाई, h टेंड्स टू, फिर आपके पास यहाँ 0 आ जाएगा। इतना क्लियर हो दिस पार्ट? यस सर। Yes, sir. Okay. Now, if we will put in this, so ये कितना होगा? h tends to 0 sin pi plus h by pi plus h minus pi. Now sin pi plus theta क्या होता है? What is pi plus theta? Hmm? So pi plus theta will lie in third quadrant. Third quadrant, ये अभी नहीं पता आपको? हाँ, नोमा एंड नम्रा इस, सर ट्रिग्नो किया नहीं थी इससे। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी ट्रिगो नहीं किया है। फिर तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अभी नम्रा एंड नोमा आपकी क्लास भी है 7:15। यस सर। ओके ओके, तो बच्चे अभी इतना टाइम नहीं है। ठीक है, वी हैव ओनली 25 मिनट्स। इसको फिर ऐसा करते हैं, आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, सो अभी क्या करना है? ठीक है, क्योंकि अभी हम न्यू टॉपिक आपके साथ स्टार्ट नहीं कर सकते हैं नम्रा एंड नोमा, क्योंकि फिर वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। वी हैव ओनली 10 मिनट्स विद यू। सो जस्ट नोट डाउन द होमवर्क, इसको फिर हम दोबारा करेंगे। आई विल एक्सप्लेन यू द ट्रिगो, फिर ये क्वेश्चन हम दोबारा रिपीट करते हैं। ठीक है, सो डोंट नोट दिस, ये कल हम फिर कंटिन्यू करेंगे। अभी स्पर्श के साथ हम क्लास करते हैं फिर 7:30, और फिर आपके साथ कल सेम टॉपिक हम दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है, सो जस्ट नोट डाउन द, डोंट नोट दिस, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट नोट डाउन द होमवर्क। होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 1 to question number 1 to 22. Okay, then एक्सरसाइज नंबर okay, exercise is 13.1, 1 to 22, 29 आप कर चुके हैं, एंड बस अभी इतना ही करना है।
ठीक है 1 to 22 29 आप कर चुके हैं 31 भी हो गया रिमेनिंग क्वेश्चंस हम कल कंटिन्यू करते हैं आपके साथ ठीक है ओके सर so Namra and Noma if you wish you can still wait and if you wish you can leave the class और फिर कल आपको सेम टॉपिक हम दोबारा एक्सप्लेन करें ओके सर। ठीक है क्योंकि अभी 9 मिनट्स हैं सो मैं Okay, आपके साथ न्यू टॉपिक नहीं स्टार्ट कर सकता वरना फिर आपका मिस हो जाएगा तो क्लास तो 7:30 तक थी ना? हाँ बट अभी निष्कर्ष सर ने इन्फॉर्म किया कि आपका आई गेस कोई क्लास है 7:15 से केमिस्ट्री है 7:15 से कोई क्लास है ठीक है सो नो माय नंबर इफ यू विश यू कैन ड्रॉप आउट फिर कल हम कंटिन्यू करते हैं तो मेरी क्लास नहीं है तो फिर मैं कर लूंगी अटेंड। अच्छा अच्छा आपकी क्लास ठीक है ओके 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 ठीक है सो वी विल टेक अ वन मोर क्वेश्चन this question is limit x tends to pi and this is sine 3x minus 3 sine x by pi minus x whole cube. Okay, please try this question. Then I will explain to you this one. ओके हाँ सेम मेथड क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था लेट x इज इक्वल टू व्हाट पाई प्लस h ठीक है सो ये कितना हो जाएगा दिस विल गिव यू लिमिट this will give you what when x tends to what pi when x tends to pi h tends to कितना होगा इस पर नो माय नंबर 0 ये 0 आ जाएगा सो लिमिट h tends to 0 ये कितना हो जाएगा sin 3 and then pi plus h minus 3 sin pi plus h by pi minus pi plus h at whole cube. So this will give you sin h tends to 0. This is sin, open this bracket, कितना हो गया 3 pi plus 3h minus 3 sin pi plus h. By open this bracket, pi will cancel minus h whole cube. Okay. So अब हम चेक करते हैं now sin 3 pi plus 3h ठीक है 3 pi का मतलब this is 0 ये pi है यहाँ मूव किया 2 pi and this is 3 pi this 3 pi so 3 pi plus 3h स्पष्ट कहाँ लाई करेगा in which quadrant 3 pi plus 3h तो मेरी भी क्लास है तो मैं लीव कर रही हूँ ठीक अभी पता चला। ओके थैंक यू सर। ओके वेलकम ठीक है स्पष्ट where this will lie 3 pi plus 3h in which quadrant थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट ये नेगेटिव हो जाएगा minus sin 3h यस सर minus 3 अब ये sin pi plus h कितना होता है सर क्या sin pi plus h सर थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट सो sin h हो जाएगा विद नेगेटिव साइन तो पॉजिटिव हो गया बाय माइनस h क्यूब हो गया कितना ठीक है स्पर्श यस सर सो प्लीज नोट डाउन दिस फिर इसको हम कंटिन्यू करते हैं
So done. Done. Okay, Sparsh. So we have then next formula sin 3 theta. Sin 3 theta क्या होता है? 3 sin theta minus 4 sin cube theta. Okay, Sparsh अभी इसके लिए टाइम नहीं है. से Sparsh याद है? Sin 3 theta is 3 sin theta minus 4 sin cube theta. So no. नहीं है. Then leave this one. Okay. इसको फिर हम बाद में डिटेल में करेंगे क्योंकि अभी LHL RHL स्टार्ट कर रहे हैं. Sparsh, this question is clear? Yes, sir. Okay, ठीक है Sparsh. Then please note down this question. ठीक है? And complete your NCERT on the basis of this क्योंकि NCERT में इतना लेवल नहीं है जो हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे थे ये हम बाद में करेंगे. Just note down this one. ठीक. और बेटर ये Sparsh, please try to do this again. सर ये तो मैंने नोट कर लिया था. अच्छा नोट कर लिया. ओके क्लियर हो गया किस टाइप के क्वेश्चंस हैं लिमिट्स में. Yes, sir. ठीक है. जब when not equal to 0 so always put x is equal to pi plus h. Okay, sir. ठीक. ओके ठीक है. नाउ स्पेश नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज ये हम दोबारा करेंगे स्पेश. ठीक है अभी इतना टाइम नहीं है. Complete नहीं करना ना. जी सर ये जो अभी आप करा रहे थे वो तो कंप्लीट नहीं हुआ ना. नहीं वो कंप्लीट नहीं हुआ. वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर कभी करेंगे. ठीक है क्योंकि अब LHL RHL बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं. ठीक है अभी हमने क्या किया हमने डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस किए थे. नेक्स्ट वी हैव अ इनइक्वालिटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाता है fx is equal to x when x is greater than or equal to 0 minus x is less than 0. So question is check whether the limit x tends to 0 fx exists or not. ठीक है अब इनइक्वालिटी बेस्ड आते हैं which have a very different method of solving. So we need to check कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है. So what is the method? हम कब कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करता है? When LHL is equal to RHL. याद है? Yes, sir. है ना? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हमने स्टार्टिंग क्लास में किया था. Yes, sir. Okay, so we will first find the LHL. So we will write left hand limit of fx at x is equal to 0. Okay, Sparsh? सर एक बार दोबारा बताना है क्या कहा आपने. हमें चेक करें कि लिमिट एग्जिस्ट और नॉट. तो लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. जस्ट टर्न योर पेजेस. देखिए फर्स्ट क्लास में आपको नोट करवाया था. Yes, sir. LHL. ठीक है सो हम LHL फाइंड करेंगे. LHL को हम ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब वी आर अप्रोचिंग दिस 0 फ्रॉम द लेफ्ट साइड. इसका मतलब नेगेटिव नहीं है. दिस नॉट अ नेगेटिव. 0 माइनस रिप्रेजेंट कि हम इसको अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड. सो fx. ठीक. सो वी हैव दिस वन. वी हैव दिस. ये हमारा x है and this is fx. ठीक. So 0 माइनस का मतलब we are approaching from the left side. So ये 0 है. So left side से अगर हम अप्रोच कर रहे हैं तो वो लेफ्ट लेस देन 0 का या ग्रेटर देन 0? सर क्या? अगर हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड. सर लेस देन 0. लेस देन 0. सो इनमें से कौन सा फंक्शन चूज करेंगे? Sir, when x is less than or equal to 0. This one, है ना? This one. So we will write limit x tends to 0 minus x. This clear, Sparsh? Yes, sir. Now in LHL के केस में always let x is equal to 0 minus h. यहाँ जो भी नंबर है always minus h. ठीक है? Yes, sir. In the bracket please write when x approaches to this क्योंकि मेन क्वेश्चन तो ये था 0 माइनस h किसको अप्रोच करेगा? 0 को. ठीक है स्पर्श. h हमेशा 0 अप्रोच करता है. सो दिस विल गिव यू लिमिट h टेंड्स टू 0 इन प्लेस ऑफ ये माइनस x है आपका माइनस इन प्लेस ऑफ x हम क्या पुट कर सकते हैं? 0 माइनस h.
So this will give you what? Limit h tends to 0 and minus minus this will become plus. Okay, now put the limit. कितना आ गया answer? 0. Yes, sir. Okay, this clear? LHL? Yes, sir. Okay, please note down this. Then we will do a RHL. Please note this and confirm. स्पर्श हो गया complete? 7 minutes. Okay. सर हमने x इज इक्वल टू 0 माइनस h क्यों लेट किया था सर fx में पुट करने के लिए हमने इसलिए लिया था क्योंकि ये LHL था. LHL में हमेशा 0 माइनस h और RHL में हमेशा प्लस h. जो भी लिमिट है ना या जो नंबर है वो प्लस आ जाएगा फिर. ओके सर Please confirm me once you note this. यस सर डन Okay. Then RHL. RHL of fx at x is equal to 0. So RHL को हम represent करते हैं 0 plus. 0 plus का मतलब approach from right side. So अगर हम right side से 0 को approach कर रहे हैं तो it's mean this number will be greater than 0. यस सर So कौन सा function लेंगे first और second? तो फर्स्ट First one x हम choose करेंगे. ठीक है. So ये कितना हो जाएगा limit x tends to 0 plus और ये क्या आ गया x. Now let क्या करते हैं RHL में 0 plus h plus use करते हैं जो भी यहाँ number है उसमें plus. In bracket please write when x approaches to 0 plus h approaches to 0. So कितना हो जाएगा? This is limit h tends to 0 और in place of x we will put 0 plus h. तो ये क्या हो जाएगा फिर? Limit h tends to 0. This is h. So this will be 0. So we will write LHL of fx at x is equal to 0 is equal to RHL fx at x is equal to 0. Hence, ठीक है. और ये किसके इक्वल है? Is equal to 0. Hence, limit x tends to 0 fx exists and और लिमिट की वैल्यू कितनी है? लिमिट x tends to 0 fx is equal to 0. Okay, Sparsh, this correct? यस सर Method clear हुआ Sparsh? यस सर Okay, चलिए इसको नोट करना है. Then we will try one more question. Then this topic is also completed. ठीक है. चलिए इसको नोट कीजिए. Done Sparsh? तो बस लास्ट टाइम लिखनी है Okay, okay. यस सर डन Okay, then please try this question. Fx is equal to 1 plus x square, 2 minus x,
x is less than equal to 1, x is greater than 1. Check limit x tends to 1 fx exist or not. Okay, Sparsh? Okay, sir. Please try this question. Sparsh, this done? Sir, I'm trying. Okay, okay, okay. You're finding the left hand limit or right hand limit right now? The left. Okay, okay. Please share your answer once you get the left hand limit. सर लेफ्ट हैंड लिमिट हम फाइंड करने के लिए फर्स्ट वैल्यू लेंगे ना 1 + x². Limit x tends to 1 minus 1 minus का मतलब less than 1. Less than 1 means this. This. So left hand limit 2 आ रही है मेरी. Push, very good. This is correct. Please find the right hand limit.
सर राइट हैंड लिमिट मेरी 1 आ रही है. जी इस पर दिस करेक्ट. जस्ट गिव मी 1 minute इस पर. ओके. Okay, so इस पर RHL you are getting 1 है ना? Yes sir. Okay, this is correct. So limit exists or not? Sir, no. No. Very good. So as far as in limits, we have these types of questions only. Okay. So your homework is complete NCERT. Okay. Now there is no other topic which is left. We have completed all the topics. So please revise the complete syllabus. And Monday you have exam of maths, है ना? Yes sir. Okay. Then if you have any doubt, then in the evening tomorrow. Okay. Tomorrow we have a class at 6 p.m. Okay. So tomorrow we will discuss your doubts. सर आप जब ट्रीटमेंट दोबारा शुरू कराओगे तो मुझे भी बता देना, मैं भी दोबारा कर लूंगा. सेम बैच में होगा इस पर. ठीक है. क्योंकि स्टार्टिंग में सिलेबस नहीं आया था टर्म 1 एंड टर्म 2 के अकॉर्डिंग, हमने इसलिए ट्रिगर किया था. ओके ठीक है. अभी कितना रिवाइज हो गया इस पर? सर अभी मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर रिवाइज किए हैं. ओके 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 ठीक है. प्लीज रिवाइज द कंप्लीट सिलेबस. फिर कल अगर कोई डाउट्स हैं तो उसको हम फिर डिस्कस करते हैं. ओके 13.2 भी करनी है. नहीं 13.2 नहीं करनी है. दैट इज ठीक है. वो सेकेंड टर्म है. अभी फर्स्ट टर्म में सिर्फ लिमिट्स है आपका. 13.1 ओनली. Only 13.1. ठीक है. So as per the first term we have completed almost all the topics. कोई अभी टॉपिक अब नहीं रह गया हमारा. ठीक है. ठीक है. फिर कल चेक करते हैं. कोई भी डाउट्स होगा we'll discuss tomorrow. Okay. Okay. All the best. Okay.